also making all of this happen, but technology is just wait in the next 3 to 5 years what it will do. The artificial intelligence community that's working on many innovative ideas. So very excited to share some of those ideas. One side excited, the other side a little guarded approach, a little frightened too. I know. But you know, when computers first came, we were the same way. We were afraid the computers were going to take away all the jobs. But you see, they created a new set of jobs. And especially for India, it was a huge boom, right? We came on the international floor to say, look, we can do this and do it better. It's amazing. Yeah, so computers had to have human interface for them to work. Here, independently, AIs could rather think for themselves, and probably people are thinking of putting in consciousness to the AI itself. I know. So that is something which is going to be a challenging task, maintaining a balance. Yes, maintaining a balance. So over to you, Commodore Raman. Wonderful. Thank you so much. I was wondering whether my turn will come forever or not. Thank you so much. And good evening, everyone. Once again, welcome to one more Friday of fun, knowledge, and lots of learning. And मेरा बहुत स्पेशल अभिनंदन स्वागत है DTOs के टीम को जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम लोग हो, अपना वीडियो ऑन रखो. हम चाहते हैं आप कैसे दिखते हो. मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊं, आपको देख पाऊं. बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये सेशन तैयार किया है. So welcome the additional members who have joined. Welcome the DTOs, and we will keep the session very light today. But it is a hugely interesting session. So the session is all about using technology for TB data and care. So आज का जो हमारा फोकस है वो डेटा हैंडलिंग पर है, वो टेक्नोलॉजी पर है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स. हम एआई की तरफ नहीं जाएंगे, हम पोर्टेबल एक्सरेज की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेटेस्ट एडवांसमेंट इन टीबी इन द साइंटिफिक वर्ल्ड उस पर नहीं जाएंगे. बट जो आप टीम हमारे साथ ज्वाइन की है, हम देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी टू मेक आवर लाइफ easier in running the TV program. So, अब DTO के साथ हमने additional staff members क्यों बुलाए हैं? And I can see majority of the staff members who have joined are young and youthful. और यही हमारी रिक्वेस्ट थी कि जो आपके डाटा मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो ज्वाइन करें. And it is such a wonderful thing to see कि majority of the staff who's joined is all young people. So today's question is one that you don't have to worry about as a leader कि आपको नहीं आता कोई सॉफ्टवेयर यूज करना, कोई टूल को यूज करना, कोई गूगल फॉर्म को यूज करना या ग्राफ बनाना. As a DTO, what is important is to know what all can be done so simply by a click of the button. और जो स्टाफ ज्वाइन किया है वे सिर्फ देखें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. And if there are any specific doubts, you want more clarity, I will request the DTOs to reach out to the QICs. We will continue to hold special sessions for your teams till your satisfaction. Also, when we are giving examples, staff, शायद आप जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे कहीं आगे का कुछ कर रहे हो. Feel free to raise your hand and tell us what better you are doing so that we can learn from you. ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ बातचीत का प्लेटफॉर्म है, शेयर्ड लर्निंग का प्लेटफॉर्म है. So
all we are going to see is how easy it is to use technology. I always give this example. My father was always afraid of using the mobile, which is natural, which is so natural for a human being. Resistance to change, insecurity, apprehension, anxiety, and it comes with age. But then I forced him to use it. Then there was a time he would never let go of it. Okay. And there are people you will see, and majority of our parents are on Facebook or on WhatsApp. They are chatting to their kids and grandchildren over video calling and everything else. So, with this brief introduction, it gives me immense pleasure to call upon Mr. Edwin Rodriguez, who will be leading the session, Dr. Pratibha Kohli, Dr. Uma Shankar, and all our QICs who have put together the session for you. And please keep the session interactive. Talk, put your messages in the chat box, and we will go ahead slowly. The session is only for 1 hour, but if the discussions will go beyond, all DTOs who have got commitments may log off at 6:30. We are perfectly okay. Those who may like to still continue may continue. Over to you, Edwin sir. Thank you, Raman sir. Yeah, Okay, I'm sorry. it's okay, it's fine. Yes, Manoj sir. Okay, so today I really have an honor of discussing how information technology, or you say IT, can play a pivotal role in simplifying the management of tuberculosis. As you know, TB is absolute a global health challenge that continues to affect millions and millions of life around the world. In our quest to combat this disease, the integration of IT has proven to be very, very powerful tool. It has potential to revolutionize the way we approach TB management, make it more efficient and effective. So here on screen, you can see 5 different buckets. We can collaborate with IT. First is communication. We'll talk in this session about the communication, about documentation, about the management tool. If we go to the next slide, so straight away coming to the point, as we have only 1 hour in hand. So when we talk about communication, in 2019, not all of us were very, very much aware about all these tools, but COVID made us aware about all these tools. So communication platform with its context of IT for tuberculosis plays a very crucial role in enhancing various aspects of TB management. These platform actually facilitate efficient and effective communication. आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको बस वीडियो कॉल करना है, you'll just go to the WhatsApp and वीडियो को दबाएंगे और आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, पेशेंट से, स्टेक होल्डर से, किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं जो इन्वॉल्व है प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ टीबी. Means we have so many different applications which we can actually use. For example, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोलैबोरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, पेशेंट एजुकेशन एंगेजमेंट कर सकते हैं, जैसे आप और So definitely, this I is think one form of collaboration also, right? Suppose so, yeah. Yeah, sorry, Pratibha, I think your connection is a bit poor. But and I also wanted to invite okay. you, Manoj, for your points. And then I'll get a Pratibha in again. So I switched off my camera so that I get a good bandwidth. Yes. Okay, I think we should take feedback from the DTOs, like how they have utilized the these tools over the time. And because we know that before Corona, we were not knowing anything about this Zoom, WhatsApp. So what DTOs think about these tools, how they have utilized over the time now? Anybody? Sir, Dr. Abhijit. Yes, sir. सर एक्चुअली रियली दैट कि हमें पता ही नहीं था कि इतना
अच्छा यूज हम कर सकते हैं इसका बिफोर कोविड देन यस सर एंड देन हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया सर कि आज हम लोग एवरी वीक और एवरी 2-3 डेज में हम हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका हम इसी पर रिव्यू लेते हैं सर। जूम पर ही हमारा होता है, गूगल मीट पे होता है एंड मीन्स एवरीवन इज हैप्पी विद दैट कि उनका कन्वीनियंस देख के हम लोग कहीं पर भी इवन आफ्टर 5 o'clock 6 o'clock हमारा कंटिन्यू हम लोग करते हैं सर। तो आई थिंक तो कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कम्युनिकेशन एंड मीन्स रियल टाइम में हम कर सकते हैं कि पहले हमें सोचना पड़ता था कि अब हमें मीटिंग कब लेना है, तो हमें वो सबका शेड्यूल देखना पड़ता, कैलेंडर देखना पड़ता था, अब वो हम देखते नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विनीता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, sir. Good morning, sir. I just want to share we are using WhatsApp as our private provider group so that we can get real-time notification from private sectors as well. We have added all our private practitioners in that WhatsApp group so that we can get the real-time notification so that we can follow up the patient quickly and register them in next year. Absolutely. Wonderful, wonderful. Mr. Edwin, before I bring you in again, I just wanted to bring Dr. Manoj for his initial remarks, and then let's roll it out. Yeah. Sure. Great. So thank you, Commodore Raman, and thank you, Dr. Pratibha and Edwin. So TTOs, मुझे आपसे ये बोलना है. You've seen the power of WhatsApp. You have seen the power of Zoom. You will see, and you're seeing the power of Google Notes, Google Forms. But आपसे मैं ये बोलूँगा, you have only seen maybe 10 or 20% of what technology can do for us in improving care for TB patients, improving care for efficiency, improving care for effectiveness of the things that we want to do, and making our lives easier and better. And I share this with you because I have seen the many uses of technology, both in the best of the best hospitals in the world, and also in the very rural settings in different countries, including US, in India, and how technology can make a monumental difference. The problem is not that there is not sufficient technology. The problem is not that there is not availability of the IT platforms. The problem, DTOs, is us. The humans are not utilizing the technology that is available. So with that in mind, during this session, we've made this program, this session with Edwin Rodriguez, who is a phenomenal IT expert working with me for nearly 2 decades in bringing technology to our DTOs. And just think, as a doctor, I can do so much, but with a doctor and an IT person like Edwin, we can do a phenomenal amount of work. And all of the stuff that you're seeing that is being done, it's because of the technology that's been available. So over to you, Commodore Raman and Mr. Edwin. Thank you so much for sharing the knowledge. And I will say only 10 to 20% of the what is available is what is being utilized by our DTOs and us. So let us increase it to another 10, 20%. Thank you, Manoj. Back to you, Mr. Edwin, Dr. Pratibha, Dr. Uma. Okay, thank you so much. Go to the next slide. Okay, so documentation. Before I start, I would like to emphasize on one thing, like this session is not an IT class. We are not going to teach you any Word, Excel, this is, we'll be only focusing on few tools, which we think, DTO should know, or I would say, these tools should be, you should be aware of all these tools so that, you can tell your team or guide your team so that they can, work efficiently. So in case you need more of the
because we'll be going a little fast and in short. So in case you feel like, okay, we need more information or more things, as Raman sir already mentioned, that we can have a separate session for this. So if you can ask the QIC and we can have a separate session specifically for this. Okay, so back to the slide. So this slide remind me of Raman sir saying, बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा नहीं. So लेकिन अगर आपका डेटा गलत हुआ तो वो भी झूठ बोल सकता है. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको सही टूल्स चाहिए और सही टूल्स के साथ आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे आप उसको यूटिलाइज कर सकें. सो आपके सामने अभी जो टूल्स अभी मैं दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, बेसिकली दीज आर नॉट द ओनली टू अवेलेबल, देयर आर मेनी अवेलेबल, बट दीज आर द टू स्पेसिफिक sets of packages or tools that are available online for documentation. One is the Google Suite, another one is Microsoft Office 365. I'm specifically talking about Google Suite just because कि ये freely available है और सब लोग mostly use करते हैं. I think 90-95% लोग mostly Google Suite use करते हैं. ज़्यादातर लोगों के पास Gmail account है, तो these tools are freely available. So the first one is the Drive. This Drive can be used to store information like आप लोग एक्स-रे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं. सो यू कैन सेव एनी फोटोग्राफ्स एंड ऑल जो आपने आपके आशा वर्कर्स अपने ACF के लिए जाते हैं, वहाँ फोटो खींचते हैं, तो दे कैन डायरेक्टली अपलोड इट ऑन द ड्राइव. सो ये सब ईज करता है. सेकेंड इज डॉक्यूमेंटेशन. यू कैन क्रिएट लेटर्स, मीटिंग नोट्स, आप फॉर्मेट बना के रख सकते हैं. यू डोंट हैव टू हर बार जाके सेम फॉर्मेट में, आपका मीटिंग का एक फॉर्मेट रहता है तो हर बार आपको फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं. एक फॉर्मेट बना दिया, यू कैन कीप ऑन रिपीटिंग दैट फॉर्मेट अगेन एंड अगेन एंड कीप दैट फॉर्मेट सेव इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इनटू अ पर्टिकुलर ड्राइव. तो वो डॉक हो गया. सेकेंड इज शीट्स. शीट्स आर नथिंग, जस्ट एक्सेल शीट्स जो कि आप लोग ज्यादा यूज करते हैं बेसिकली. नाउ आई थिंक यू हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट कॉल्ड ACF एक्सेल शीट दैट यू नीड टू अपलोड इट ऑन टू योर निक्शर, जो कि आप लोग ACF जब करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको डालना पड़ता है, उसके बाद फिर अपलोड करना पड़ता है. तो ऑल दीज थिंग्स. फिर बजटिंग कर सकते हैं. आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है वो आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग दैट यू कैन डू. देन स्लाइड्स, टीम ट्रेनिंग, आपका प्रेजेंटेशंस हुआ आपके कोलिग्स के साथ में, हायर अथॉरिटीज के साथ में. तो ऑल दीज forms and formats can be created and can be utilized over the time. आपने एक फॉर्मेट बना दिया, आपको हर 6 महीने या 3 महीने में सेम प्रेजेंटेशन देना रहता है, बस आपको ग्राफ चेंज करना रहता है. तो आपने बना के रख दिया, ग्राफ्स आपने ऑलरेडी एक्सेल में बनाए हुए हैं, वहां से आप सिंक कर दिए और आपका प्रेजेंटेशन रेडी. सो एडविन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आप हमें बता रहे हैं, जैसे G Suite हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसमें आपने हमें ड्राइव, डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स सबके बारे में बताया. हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स? सी, दोज डॉक्यूमेंट आर लाइक हैंड रिटन एंड स्टोर एट वन प्लेस. आपको जब चाहिए आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर आप उसको निकालोगे. I'll take an example of ACF. आप आशा वर्कर्स आप भेजते हैं डोर टू डोर, वहाँ पर वो रजिस्टर में नोट करते हैं, देन दे कम बैक एट द एंड ऑफ द डे और वो रजिस्टर फिर आप DEO को देते हैं, वो टाइप करता है, एंट्री करता है. इट टेक्स टू लॉन्ग. ठीक है. सो व्हेन यू डू एवरीथिंग ऑनलाइन, आपने अगर एक ACF फॉर्म बना के रखा है और ऑनलाइन एंट्री हो रही है, तो एनी सुपरवाइजर और द DTO कैन सी इट लाइव. ओके, अभी बज रहे हैं एक बज रहा है सपोज. सो ही कैन सी, ओके अब तक 40 एंट्रीज हो चुकी हैं. अगर वो ऑफलाइन करता है, रजिस्टर पे करता है, तो उसको जब तक वो रजिस्टर हाथ में नहीं आ जाता तब तक उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आशा ने किया क्या है. और अगर उसका जो पोजीशन अगर वो स्लो चल रहा है तो ही कैन कॉल हर एंड से ओके नो, इस टाइम तक तो आपको 50 हो जाना था, 60 हो जाना था. तो दैट काइंड ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैन बी डन राइट अवे. सो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ACF हो रहा है फील्ड पर और जैसे जैसे आशा वर्कर्स एक घर से दूसरे घर में जा रही हैं और रिपोर्ट सबमिट करती जा रही हैं, ऑनलाइन DTO भी देख लेगा, उनका TU भी देख लेगा कि कितने हो गए, कहाँ पे हो गए. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से डॉक्टर मिस्टर एडविन?
Yes, absolutely. Everything will be synced online because ये जो forms वगैरह हैं हम आगे बताते हैं कैसे कैसे करेंगे उसको. Raman sir, before we proceed, I just want to take 1 second for this. जो ये गूगल हमारी जो जितने भी गूगल स्वीट है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये इंश्योर करता है कि हमारी अवेलेबिलिटी हो, एक्यूरेसी हो, एक्सेसिबिलिटी हो क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस जो हमें उस समय चाहिए, जैसे एसीएफ चल रहा है और हमें रियल टाइम में सारा डाटा प्रोवाइड होता है, चाहे वो प्रोवाइडर का हो, पेशेंट का हो, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी का हो. तो दैट इज द पावर ऑफ दिस ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन. बैक टू यू एडविन. दिखाना पड़ेगा, मैं नहीं मान रहा, ऐसे थोड़ा ही होता है. आपने कह दिया और हम मान ले. आपको अभी थोड़ी देर में हमको Let's show it, Edwin. Yeah. Let's prove it. Okay. So we'll show in the coming slides. Give us few seconds. So there are a few more options that are available other than just doing ACF forms. We can make like patient survey, referral forms also. You can even use the translate drawings. These all can be created on this. So I think let's move to the next slide. I'm absolutely excited about these surveys. Okay, so Raman sir, here is your thing. Okay. I'm waiting to see. And parallelly, I have put a question in the chat box. Okay, so I'll ask Kritika. That the Maharashtra ACF has just concluded. Oh. And we must congratulate Dr. Meenakshi for topping it. But I have put a question. How many of the DTOs use the Google form? So Dr. Manish from Akola has said that he has used it. And we will now see what we can do, how we can exploit it better. Yes, sir. Please, Manish. Okay, so I'll ask QIC Kritika to demonstrate like how this Google form can be used for active case finding. Kritika. Yes, sir. So this is a Google form. आप DTOs and team आप Google form देख सकते हैं अपनी screens के ऊपर. तो first जो हमारे सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे हम उनको भरेंगे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही भर के दिखा रही हूँ आपको. तो फर्स्ट हो गया हमारा नेम, देन वी कम टू द जेंडर हमने यहाँ पे फिल किया, हमने एज फिल किया. So कृतिका, Yes, एक क्वेश्चन है मेरा आपके यहाँ पे. एक्चुअली दिस इज फॉर यू एडविन ऑल्सो. सो जैसे जैसे हमारे आशा वर्कर्स फील्ड में होते हैं, ठीक है, वो जैसे कृतिका फॉर्म भर रही हैं, ठीक है, तो क्या ये सारा डाटा हम कलेक्ट करके डीटीओ को मतलब डाउनलोड करके डीटीओ को दिखाना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली डीटीओ जहाँ बैठे वहीं पे उनको दिख सकता है? This is automatically synced. So जैसे आप इसको सबमिट करोगे, the data will be visible to the DTO directly. Like this is the response sheet. So आपने वो फॉर्म देखा था, ये response sheet है. So ये जो जैसे जैसे आप फिल करते जा रहे हो, टाइम के साथ आपको दिखता जाएगा कि कितने बजे वो फॉर्म फिल हुआ है. So they can make it. अगर मैं कहूँ कि उस वाले TU के STS को भी दिख जाएगा? Absolutely. जिसके पास भी ये response sheet shared है, everybody can see from anywhere of any part of the world. STS अपने घर में बैठे हैं तो भी? बिल्कुल. So Dr. Badiuddin, yes sir, what is your query? Sir. Please unmute yourself. Yes sir, no query sir. We are also already using the Google Sheet. That's why. Okay, you're using the Google form. Okay, wonderful. Please. Okay. Thank you. सर देन आई गो फॉरवर्ड, आई विल पुट द मोबाइल नंबर, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अब बाद में आपको कॉन्टैक्ट ट्रेस करना हो तो मोबाइल नंबर इज मस्ट. देन पिक्चर. अब यहाँ से आप अपने स्टाफ से, जो फील्ड स्टाफ है वहां से आप जीपीएस मैप कैमरा के थ्रू भी फोटो मंगवा सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीधा हमारा वहीं पे आ जाएगा. सो आप देख रहे हैं मैंने अपने स्क्रीन से सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर, 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर मैंने फोटो अपलोड कर दी है. देन अब इसके ऊपर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, इट्स ओनली कि आपको क्लिक ऑफ द बटन पे ही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं. सो अगर आपका डाउट ये है कि आशा वर्कर इतनी नॉलेजेबल नहीं है तो उनको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है. उनको सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम्स उनको दिखते हैं उसको वो क्लिक कर सकती हैं. मतलब कि मैं कहीं से भी फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकती हूँ? यस मैम. ग्रेट.
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे को इसमें ना लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, और कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस होती है, तो क्या हम इसमें लैंग्वेजेस को भी चेंज कर सकते हैं? जैसे अगर पेशेंट को कोई और भाषा समझता है, कई बार आशा लोकल भाषा में ही बात करना चाहते हैं और पेशेंट भी लोकल भाषा में ही बात करना चाहता है, तो क्या इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है? Yes, so basically Google can translate into many languages. So same because this is a Google product. So ये जिस लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना है वो ट्रांसलेट कर सकता है। अगर कोई ट्रांसलेशन नहीं आता है तो गूगल भी हेल्प कर देगा, उसको कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर में डालेंगे तो वो भी ट्रांसलेट करके आपको इजीली दे देगा। इसलिए अलग से एक ट्रांसलेटर की जरूरत भी नहीं है कि चलो लोकल लैंग्वेज में अगर किसी को नहीं आता है, कोई नया है, तो वो भी उसको यूटिलाइज कर सकता है। और बहुत बढ़िया सवाल आया है डॉक्टर मनीष का। उन्होंने बोला कि आशा वर्कर्स के लिए गूगल फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये फॉर्म डॉक्टर मनीष जो हमने क्रिएट किया है with lot of efforts and insight, and this is just a demonstration form. ये आपको सिर्फ सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, बट इन दिस फॉर्म nothing is to be filled, everything is just a touch button, everything is a choice. मल्टीपल चॉइस है, सिंगल चॉइस है, सिंगल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, मराठी में, कन्नड़ा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, यहां तक कि आखिरी में हम दिखाएंगे कि आशा वर्कर को अपना नाम भी नहीं टाइप करना है, उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, गो अहेड प्लीज। यस, सो लास्ट में जहाँ पे डेटा कलेक्ट है आप इसमें ये ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि कौन सी आशा वर्कर का नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप उसका भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि पर आशा आपके पास कितना एक्टिव केस फाइंडिंग हुआ। तो वो एक आशा वर्कर के लिए भी इजी हो जाएगा, और जो डीटीओ है और उसका जो स्टाफ है उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। बस इतने क्लिक से ही हमें सबमिट कर देना है हमारा गूगल फॉर्म। सो आपने जैसे ये सारा फॉर्म सबमिट किया, मीन्स किया, तो मुझे ये सारा समरी कहाँ पे दिख सकता है? मतलब मुझे कोई एक्सेल है जिसमें मैं कुछ ये सारा डाटा देख सकती हूँ? यस मैम, जो नीचे रिस्पॉन्स शीट है उसके साथ ही हमारे को चार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो हम अपना डेटा को बहुत इजीली देख सकते हैं। सो आप देख सकते हो पाई चार्ट्स में खुद ही कन्वर्जन आ जाते हैं, परसेंटेजेस एंड नंबर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसकी एक्सेल भी हम देख सकते हैं, क्योंकि दीज आर द पाई चार्ट। Yes, समटाइम्स हम लोग इसको मुझे और डाटा एनालिसिस के लिए चाहिए, तो क्या इसका एक्सेल भी हम देख सकते हैं? यस मैम, जैसे हम फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हैज एनीवन इन योर फैमिली हैड फीवर फॉर मोर देन 2 वीक्स, तो मैंने नॉर्मली एक फिल्टर लगाया इसके ऊपर और यस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक किया, तो मेरे पास सारे जो यस के क्वेश्चंस हैं वो एक बारी में फिल्टर हो जाएंगे। तो पूरा डेटा मेरे पास एक ही जगह पे कुलेट हो जाएगा। तो ये सारे यस वाले आंसर्स हैं, तो वही मेरा डेटा कुलेट हो जाएगा यहाँ। I think that's wonderful. So I just wanted to ask, can we customize this form for ACF or for IEC also? Yes, ma'am. We can do it as we want. I mean, you can if you have a particular format, the same format can be used and created accordingly. Great. और हमें ये भी पता चलेगा कि किसने कितने बजे एंट्री डाला है? Yes, as I showed you earlier, जो आपका जो एक्सेल शीट है उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट जो कॉलम दिखेगा वो टाइम स्टैम्प का ही होता है, तो यू कैन नो एट व्हाट टाइम, व्हाट डेट एंड टाइम द पर्टिकुलर एंट्री वाज मेड। ग्रेट। सो जो आपने मुझे समझाया, मैं इससे समझ पा रही हूँ कि मुझे टाइम स्टैम्प भी मिल रहा है, मैं अपने हिसाब से इस शीट को चेंज भी कर सकती हूँ, किसी लैंग्वेज में भी बदल सकती हूँ। और आपने जैसे सेलेक्ट किया, एक के कॉलम को सेलेक्ट किया था, ठीक है। बट मेरे को एक चीज और जाननी है एडविन, कि क्या इस डाटा को मैं एनालाइज भी कर सकती हूँ, कुछ चीजें फिल्टर भी कर सकती हूँ? Yes, you can do it as you like. I mean, this is normal Excel sheet. जैसा आप normal Excel sheet में काम करते हैं, वैसे इसमें शीट में भी आप काम कर सकते हैं। जैसा अभी कृतिका ने बताया कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, दिस इज सेम। So basically, Excel, Google Sheets and Excel both are almost the same thing. The only difference is ये ऑनलाइन है और आप कई बार Excel ऑफलाइन भी यूज करते हैं। सो अभी देखो, जैसे स्क्रीन पर आई थिंक कृतिका ने करके दिखाया है। एक क्या करके दिखाया कृतिका भी आपने जस्ट नाउ? सर नो कर दिया है कि मेरे घर में किसी को भी फीवर नहीं रहा है, तो मैंने नो पे क्लिक किया।
हाँ हाँ, तो मतलब मान लीजिए डॉक्टर उमा ने आपसे अभी सवाल पूछा होता कि हैज एनीवन इन योर फैमिली बीन टेस्टेड ऑफ टीबी, तो आपने पूरा का पूरा जो डेटा आपके पास लगा दिया. Yes, yes, sir. Okay, okay, okay. So now tell me, Mr. Edwin, then it must be very difficult to make this form. कितना टाइम लगता है इस फॉर्म को बनाने में? बिल्कुल टाइम लगता है. जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं, जैसे अभी कृतिका ने फॉर्म फिल किया, उतना ही टाइम में आप बना सकते हैं. कृतिका, आई थिंक यू कैन गो डाउन. कुछ नहीं करना रहता है, इंसर्ट करना रहता है, और ऑन क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन क्रिएट न्यू. सो गूगल फॉर्म बनाना भी बड़ा सिंपल है. वो फ्री भी है, वो आपको गूगल के साथ अवेलेबल है, वह ऑनलाइन चलता है. आशा वर्कर्स को उसमें कुछ लिखना भी नहीं, उसको सिर्फ क्लिक करना है. सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं. जब वो डेटा सबमिट हो जाएगा, वो एक एक्सेल शीट में अपने सामने आ जाएगा. वो डीटीओ को भी मिल जाएगा, वो एसटीएस को भी मिल जाएगा. उसके साथ एनालिसिस भी कर सकते हैं. मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. और इतना ये ही बड़ा नहीं, इंटरेस्टिंग है. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग और सवाल पूछें. Yeah. Great. I mean, I'm really impressed with whatever is happening here. आपको डेटा एंट्री दिखाया, फिर डेटा जो है एग्रीगेट्स करने में एक्सेल स्प्रेडशीट्स दिखाया, फिर वो फिल्टर्स करने का दिखाया. I was wondering whether I could visualize this on a map. If not this, any of the data available in Nikshay or elsewhere, can I visualize it on map, Mr. yes, absolutely, we can visualize that. Why do you want to visualize it on map, Dr. Uma? Yeah, it has a lot of program implications. I mean, if I visualize things on map, it gives me a lot of insights on where my cases are concentrated. It gives the distribution of the cases, or if I consider ACF per se, I will see where all the ACF activities have happened properly. Has it happened as per my expectations, or were there any shortcomings? And yeah, I just see the map here. Great, Mr. Edwin. Okay, so whatever data you showed on the Google form, that is automatically translated into the graphs that we can utilize. But what Dr. Uma sir is asking is, like, can these data can be correlated into a map? And the answer is yes, we can do that. So I'll take you through an example so that I can give you a quick demo. नहीं, ये तो मैप तो ठीक है, पर ये हम सबके पास डाटा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर वी विल ऑल गेट दिस डेटा टू मेक इट ऑन अ मैप? एडविन सर. Yes, sir. So सबके पास everybody is using Nikshay. Yes. And everybody is exporting data for Nikshay. Oh, so you mean to say that this map you have created by using exactly the Nikshay report, the way it comes, which is available to all of us? Yes. So let me share my screen and I'll show you what exactly I'm talking. So this is the Nikshay data. So I think everybody will relate to this. So which has yes. facility. Okay. Yeah, Mr. Edwin, I see that this is a notification register. Yes. So you can export data. And I'll tell you what is the most important thing, what is required to create a map to answer Dr. Uma Shankar's answer, and that is the lat long, which is called latitude and longitude. These are the geo coordinates that will help to mark the particular record onto the map. So I'll show you, I'll walk you through step by step how this can be done. So one thing I just want to add is I don't think any latitude or longitude is added by our health workers. And I only understand, as a program manager, I understand there's something called as a geotag button, and they only click that. And that actually captures the latitude and longitude on the Nikshay report, right, Mr. Edwin? Yes. So all the lat long is already recorded into the Nikshay. This, what you saw actually is the exported format of the Nikshay. So let me show you how this can be done on a map. So what you see on my screen is nothing, just a Google map. This is also
product of Google. So if you go into maps.google.com, you will end up over here. And I'll now import that data, which I have just showed you. So I'll click on import, browse. I'll fetch the patient data, open. Then I'll see where are my place marks. Place marks means my lat long. So it's already by default. Continue. Hello. And then the site of disease, I want to mark. Hello, sir. So once you import that, you will see all the data popping up. So you have pinned all the data onto the map. So this was the Bengaluru data. So you can see these are all the Bengaluru data. Yes, Umashankar sir, you're saying something. Great. I see the distribution of TB cases in the Bangalore city area. I mean, I'm really impressed with this, but I would rather want to know, can I have a segregated information spatially about extrapulmonary and pulmonary TB here? Yes. So what you see is like a uniform data. I mean, this does not give much of a meaning unless and until you filter out, the data between like pulmonary cases and extrapulmonary cases. So I'll do it for you. So how do I do this? So I'll click on site of data. So we'll see. So there are 164 pulmonary cases and 79 extrapulmonary, and out of this 17 have no record. So that's why it is gray. So now you see that green are pulmonary and yellow are extrapulmonary. Now these, if you want to change the color and all that also, you can change. You can customize these colors. Let's suppose for the pulmonary, you want to make it like say orange, and you want to make extrapulmonary as red, you can make it red. So this is how you can make it out. I mean, you can easily now make it out which are the hotspot areas. You can zoom in, zoom out. And so, see. Dr. Uma, how can a DTO exploit this information? Now you wanted to see on the map. Here, Mr. Edwin has put it on the map for you. You wanted to see pulmonary, extrapulmonary separately. You want to see where the concentration of cases are. Everything is there for you. So how can a DTO you exploit it more? If we knew, I would love to know this, because if I mean, basically, I would not want to know where the pulmonary cases are distributed, because as per the program guidelines, I am supposed to do contact tracing as a priority wherever pulmonary cases are there. And I would want to know whether contact tracing has happened. And that is, if I can get the map generated as early as possible after diagnosis of TB cases, on a weekly basis, or maybe on once in fortnight or something like that. And then that contact tracing in turn, again, as a cascade of care follow-up, it helps me to implement my TPT, TB preventive therapy. That is for real time, this thing. But as a surveillance, I can see these maps after maybe 1 month or 2 months, or maybe quarterly data I can take and see the maps, and I can see the distribution of cases geographically, and then I can take a call that there are so many cases concentrated in one particular location, and I can collect the information from other sources, whether there are a lot of slums located there, or there are some industries there, and do I need to focus on doing ACF activities in those localities where there are more cases. So it gives me a lot of information on improvising my program in my. Absolutely. In the sense, I can see if you can, plot the position of your TU, you can plot the residence location of the ASHA workers also, and you can plan the route of the ACF. You can do anything. Raman sir, you hit on the dot. So I'll show you that also. So that will be very helpful. I'll allocate my resources. Correct. Yes, Mr. Edwin, you can show me the location of my TUs. Then it helps me for resource mobilization, for mobilizing my HR into those locations. Correct. Okay. So here you see the patient data. Now we'll create another layer. So you can see how simple is that. I'm just clicking. I'm doing everything in front of you. It's not like I have created and kept it and then I'm just serving it. Everything I'm doing is in front of you to showcase like how easy it is to just import and just map it and import it. So I'm clicking on add layer. This is another layer. Import, browse, fetch the data where you have kept it. This is my TU data.
which has the geo coordinates. Continue. I'm labeling all this as TU unit, finish. There you go. So you can see where all the blues marks that you see are the TU units, but you can see, this is getting mixed with the patient data. You can change the icons. You can click on the customize and you can change the icon. Let's say I'll keep this icon as this. And now you can see it is segregating a bit. And now you can know where my TUs are. Does that answer, Dr. Umar, sir? Yeah, that's wonderful, Mr. I would love to have this for improvising my, service delivery in my location. Okay, so I'll move to the next. Okay, so I'll ask Raman sir to take this from here. Absolutely, absolutely. Thank you, Mr. Edwin. Thank you very much. Very interesting. And DTOs and DTO staff, anyone who would like to learn these things, you can put in the chat box, or you can show by raising your hand through your mobiles, through your laptops, whichever way you've joined, so that we understand that you are with us, you are understanding, and we will conduct a session for you. It is very, very simple to understand this. But you must know that even Nikshay offers lot of these graphs and the graphical methods and diagnostic tools automatically. May I request if Ekta could help me in trying to tell everybody that what all can be done using Nikshay. For everything, we don't have to work hard. This is just by a click of a button. Yes, Ekta. Absolutely, Raman sir. There are many graphs and charts which are already there in Nikshay. You can just copy and paste over any slide and you can showcase over it. Like, for example, there are graphs of treatment initiation, public notification, total notification. Can we move to next slide? So in the next slide, we can see there are differentiation also, like pediatrics versus adult notification. So exactly these pie charts are already available on Nikshay. We can just copy and paste it. Okay. So DTOs, it is available to you at the click of button. I am sure majority of you are aware. This can make your presentation, your reports very interesting, very informative. It is very easy to look at a graph and understand the district, the way it is progressing, if any gaps are there. This is available to you at the click of a button. And just in case, if any of the DTO staff wants a session here, we have some wonderful DEOs from across the country, because we have been conducting these sessions in the entire country. And there are some people whom we know, they will take the session for all of us. They will refresh our memory. If at all, some of us have forgotten how to use these graphs. Any more graphs, Ekta, to show? Yes, so next we have pie charts also. But here I have one question to Edwin sir again, because many graphs are already available on Nikshay, definitely. But DTO and team will agree there are many other data which they needs to plot that graphs. So yes. Edwin sir, can you help us and show how beautifully we can showcase that too? I just want to add here, basically these dashboard data, though is very attractive and highly informative, selecting the right filters are very, very important. If we don't select the right filters, say for example, the primary filters would be selecting the currently assigned patients to my district, not the diagnosed. If I don't do that, I may get more cases and ultimately I may be answerable for a lot of cases where no action has been taken. So DTOs needs to remind that applying proper filters are very. Okay, so thank you, Uma sir. So back to Ekta's question. I know when you're using Nikshay, you have a limited number of graphs. You may require graphs based on your data which you have collected, like you have done ACF, and you want to see like where
what are the number of males, females, or who are the diabetes, non-diabetic, or any other data. So how we can do that? So one will say, okay, I'll just do, I have a data, I'll just select the sheet and create a graph right away. So that is not a right way to do it actually. So when you try to do on the main data, you are basically manipulating the main data. So to avoid that issue and confusion, you need a tool called pivot table. This pivot table is basically available on Google Sheets. It is also available in Excel, Microsoft Excel also. So how this is created? What are the requirements basically to create a pivot table? So first of all, it has to be in a tabular format. Each data need to have a particular column header. Row should not be empty. If the row is empty, obviously, the data will not be fetched. So these things you need to take care of. So to showcase how it is done, I'll take the live again, the same data, and I'll show you very quickly. I know we are running out of time, but I'll just run through it and I'll show how this can be done. All right. So this is the next data I was talking about. So I'll just select all. Go to insert, pivot. I'll use a new sheet so that I do not disturb my current one. Create. Okay. Right now I'm creating gender-based chart. I want to know like how many males and females are there in my chart. I mean, I want to see the gender count. So I'll put the gender into the rows so that I know what genders are available, male and female. Okay, now I want to know how many, what are the count for this gender. So I can pick up the gender and put into the value on count. So now I know this many number of females and this many females are there in my database. Okay, now I want to convert this into a graph. Very simple. Now you notice I have not disturbed my main data. This is my data. I'm not doing anything here. This has created altogether a separate sheet so that I am not disturbing anything. I'll tell you why I'm doing this in a pivot table. So you just select it, click on insert, chart, and here you go. The chart is ready. Not only that, you can click on it and make changes like, if you want to change the header, you can change it. You can even style it. You can make it 3D, so it will look more attractive. You can change the color. So I'm not going into the detail at the moment, but you can change the pie color. Like, you want to make it blue, you can blue to orange, green, anything. The second thing is you can just copy it. The reason why I have created pivot table is I have created a separate sheet. I can just copy and paste it into my presentation. I can copy it, paste it into your presentation. The same graph will be there live available anytime during my presentation. Yes, Umar sir, I think you have a question. Dr. Umar, you're on mute, sir. So, I mean, you can create any type of graphs, right? Yes. Great. That is great. Okay, I thought this is really very, very interesting. So, DTO's staffs, has anybody amongst you been using this tools? If you have been using, I would like to see a show of hands. Let's move ahead. Just a show of hands if any one of you been using. Yes, Dr. Vinita, thank you so much for informing. Edwin sir, you keep please progressing ahead. Yeah, okay, only one point I had, Edwin sir, only one point I had was, I mean, we were specifically told during our trainings to consider patient ID as the unique ID here rather than the, I mean, sorry, the episode ID as the unique ID here rather than the patient ID. Because when I use the patient ID, the counts change here as compared to using the episode ID. So we need to use the episode ID for the counts. That's an input I want to give to DTOs. Thank you. Okay, all right. Thank you so much. Yes. Okay, so this was the pie chart. Now we can create the similar
graphs, bar graphs also. So I'll show that also. Suppose if you want to check the diabetic and non-diabetic based on a particular test, so that also we can check. Hello. Somebody have a question? So next DTOs we'll be showcasing. Edwin sir, I'm just filling the space. So when you're ready, you can start talking. Okay, I thought somebody is asking a question. Okay. No, nothing. Okay, so here I'm taking the basis of diagnosis here. Next, we will be seeing that if suppose you have put a graph in your presentation, right? And majority of the time, DTOs, the presentation that we make either to our STO or to the district collector or to any dignitary, it is the same standard format. Only the monthly data changes or the quarterly data changes or the annual data changes. There is no change in the format of the presentation. We will be showcasing how you can link the graph to your presentations. And while you are going to the district collector's office and the staff is sitting in the office and correcting the data, your presentation will always be dynamic. It will always be current. It will always be ready. You will not have to prepare it before night or spend efforts and do that. I know, Dr. Pratibha, it was your point. You would have brought it. Raman sir, you stole my words. I am just filling time, because I do understand. Yes. I do Okay. understand. There I So have the data. So this data, same data can be, you can see like, how we can convert that data into non-diet. I mean, you can have data like in non-diabetic and non-diabetic based on a particular test. So this same data can also be converted into a graph. मतलब एडविन, मतलब हमने जो आपके पास में जो डाटा था, इतना सारा आपने मुझे डाटा दिखाया, उसमें डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक हम आपको देख रहे थे कि आप हमारे सामने ही वो सारा डाटा फिल्टर कर रहे थे. आपने सारा फिल्टर करके साइड में निकाल के ग्राफ भी बना दिया इतनी देर में. Yes, so that was the point. It does not take time. So the moment you have the data in the pivot table, you can segregate and do and play around with the data as you like. Great. Edwin, where are you? Means, where are you positioned? I'm in Indore. Okay, I'm in Delhi, and I like to know from our QIC. Dr. Harsha, where are you? Ma'am, I'm at Pune right now. ओके, यू आर एट पुणे राइट नाउ. सो अभी रमन जी ने बात किया कि हमारे पास में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हम डाटा को लेकर जाते हैं और हमें बोला जाता है ये डाटा नहीं है या इसमें ये डाटा ऐड कीजिए. तो हम तो उस मतलब आप ले लीजिए, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, तो उस समय हम डाटा में इम्प्रोवाइजेशन कैसे करें, कैसे इस चीज को हम हैंडल करेंगे, कैसे वहां पे चेंज करेंगे. हमें वहां पे टाइम मांगना पड़ता है, पर हम आपको यहाँ पे आज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, एडविन इंदौर में है एंड हर्षा पुणे में है. कैसे ये एकदम अलग अलग जगह पे बैठते हुए विद अ क्लिक ऑफ बटन द डाटा कैन बी अपडेटेड. कैन यू हेल्प मी शो दैट प्लीज? Okay, so I'll take help of QIC Harsha. Yes. QIC Kritika, to start updating it. So you can see there are two people updating at the same time. डॉक्टर कृतिका, आप कहाँ पे हैं? चंडीगढ़. देखिए, हम लोग सब लोग चारों के चारों लोग अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है. और अभी जी, somebody is at Chandigarh, somebody at Indore, somebody at Pune, you are in Delhi, Edwin is at Indore, and all of you are correcting the same presentation right now in front of us. Absolutely. See, just now they have corrected it and added on to the presentation. If I can see the presentation just now, see, it has already been corrected and in real time it is on the presentation. So I can't see the screen. Yeah. Can you show the screen, please? Yeah. सो देखिए, अभी कृतिका जी ने ऑलरेडी स्क्रीन में टेक्स्ट डाला है एंड फोटोग्राफ अपलोड किया है.
विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, इट इज दैट इजी। आपको बस सिर्फ डालना है और आपको वहां पे अपडेट हो जाएगा। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपके पास में डाटा, यू जस्ट नीड टू फिल इट एंड यूल गेट दी, बूम, यूल गेट दी अपडेट्स, राइट। हर्षा, क्या आप मुझे एक बार वो दिखा सकते हैं, ग्राफ दिखा सकते हैं? Wow. So I have a notification data here, public notification and private notification, right? So can I see, my DM wants to see total notification. Can you add the data? Yes, ma'am, we can do. वो जानना चाहते हैं कि total notification of the district कितना है? Okay, so on the screen I can see, and now you want me to say that you will change the graph also in the presentation. Absolutely, we can change the graph. We'll Data just updated. enter it and see it's updated. Dr. Harsha just updated the presentation and see, you can see the yellow lines. जबकि Yellow प्रेजेंटेशन graph. किसी का दिखा रही है, प्रेजेंटेशन किसी का दिखा रही है, डेटा पीछे से हर्षा ने ठीक किया है। Absolutely, this is the power. This is the power of IT. कृतिका बैठी है चंडीगढ़ में, हर्षा बैठी है पुणे में, और मैं यहाँ पे उनको बता रही हूँ जस्ट, और आप सब लोग अलग अलग जगह देख रहे हैं, आप सबको दिख रहा है वो। तो अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं मूव कर सकता हूँ एज ए डीटीओ हियर एंड देयर, अपना लैपटॉप हाथ में लेके और कहीं भी खोल के प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, मेरा डेटा हमेशा लाइव रहेगा। एब्सोल्यूट। सो रमन जी, आप बताइए कौन सा डेटा इसमें चेंज करना चाहते हैं? विल चेंज इट इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट मंथ का अगस्त का डेटा में, डीटीओ चंद्रपुर, आई कैन सी यू, कैन यू हियर मी? ओके, सो अगस्त के डेटा में आप पब्लिक नोटिफिकेशन को 20 कर दीजिए। Data updated, sir. तो हमारी बात पूना ने सुनी, और लेट अस सी व्हेन इट स्टार्ट शोइंग। ओह, इट हैज गॉट अपडेटेड, एब्सोल्युटली। कृतिका की प्रेजेंटेशन में इट इज शोइंग 20 नाउ। See, that is the beauty of the tools. So these are the documentation tool which we have been speaking. Edwin अभी तक आपको यही समझा रहे थे कि documentation में accuracy जरूरी होता है, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिल रही है, accessibility हमें मिल रही है, availability है, यही चीज हमें चाहिए to lead us to a better patient care, more efficient public health efforts and advancement in TB. अगर हमारे पास ऐसा tool है तो हम क्या नहीं कर सकते? Actually, I'll share a story. So Commodore Ravan and Dr. Pratibha and Mr. Edwin. So it was probably about a year ago, I was having meetings at the ministry, at PMO office and others. And I had a conversation at the ministry. And then I was going to the PMO office. And in that conversation at the ministry, there were new ideas that we had come up with. And I needed to put that in my PowerPoint presentation. I was working on the PowerPoint, but I needed some data that could be filled. I called up Edwin, and he's in Indore, and we were working on it. I was in the car and in the taxi, and we were making the changes to the presentation, with changing, just like as you change the data right here, to improve the presentation within 15 to 30 minutes. And the new presentation was prepared. So DTOs, the flexibility and the ability for us to do, itna sari cheezein apan kar sakte hain. Again, the limitation is not the technology. The limitation is not the access. Matlab we don't have the things, the software or things. The limitation is us. Absolutely. Us as humans and individuals and technocrats. And I'll say us as doctors. Doctors are the number one limitation to the use of technology. हमको EMR, electronic medical record use करना कितना time लगा? निक्षय भी बहुत time लगा. अब आप देखिए, if you begin to use that technology, it makes a huge difference. So I'll just make a very simple point, maybe very effective point, because I am very conscious of that, Dr. Manoj. If I have a routine presentation in which I have to keep updating this data, it will take me at least 1 hour to, update the presentation, a night before or day before or whenever.
if I can spend that 1 hour with my family, wow, it is so great, because the data to apne aap hai, my presentation is ready. I have to do nothing. It's a routine presentation. But otherwise, to update it, I would have taken an hour. I can dedicate that time to my family. Wonderful, marvelous. Back to you, Mr. Edward. Absolutely wonderful. So अभी तक हमने समझा कम्युनिकेशन के कौन कौन से टूल्स हैं, हमने समझा डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन से टूल्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल्स हैं. सो हम यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं गैंट चार्ट. गैंट चार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है जो बेसिकली हमें बताता है कि हमें काम कैसे ओवर द टाइम कंप्लीट किया है इन रिस्पेक्ट टू टाइम प्लान. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने आपके साथ में ये ट्रेनिंग प्लान की है, तो हम आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में टास्क लिखा हुआ है, राइट साइड में टाइमलाइंस है जो शेड्यूल बार्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं. तो जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान होता है तो अगर हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस टास्क को किसको देना है. और गैंट चार्ट हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे बॉटलनेक्स आ रहे हैं, कहाँ पे हमारी जो कोई टास्क है जो हम नहीं कर पा रहे हमें वो एक्सक्लूड करना है, या फिर किसी चीज को एडिशनल टाइम देना है, कौन सी चीज है जो नॉन क्रिटिकल है और अभी नहीं हो रही, डिले में जा रही है, उसको हम साइड में रख सकते हैं, कौन सी क्रिटिकल है जिसमें हम और रिसोर्सेज डाल के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो ये सारा का सारा जो गैंट चार्ट है ये हमें सब चीजें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रोजेक्ट डेफिनेशन एंड प्लानिंग हमें करना था, तो हमने हमारे पास सब हमने डिवाइड किया उसको. फॉर एग्जाम्पल, हमने डॉक्टर अंकिता को दिया, हमने देखा कि वो टाइमलाइन पे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. इस तरह से मल्टीपल चीजें हमने देखा. सो डॉक्टर उमा, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. सो डॉक्टर उमा, आप Yes. तो एनटीआई में हैं, आप तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते होंगे. सो आप कैसे मैनेज करते हैं अगर कोई चीज जो है अपने टाइमलाइन को नहीं रीच कर पा रही है? या एक चीज तो एनटीआई का मैं बता सकता हूँ, बट दूसरा चीज विच विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर डीटीओज इज अपना काम का गैंट चार्ट बना सकते हैं क्या वो लोग करके, मैं समझाना चाहता हूँ. अथवा आई वांट टू जस्ट टेल एक चीज मेरे ध्यान में जो आ रहा है वो एसीएफ है. अगेन सी एक्टिव केस फाइंडिंग जो है हम हमेशा प्रोजेक्ट मोड में ही करते हैं क्योंकि वो रूटीन एक्टिविटी नहीं है, प्रोग्राम एक्टिविटी नहीं है, वो एक्चुअली प्लान्ड एक्टिविटी विच हैज टू बी फिनिश्ड इन अ गिवन टाइमलाइन. तो उसको अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो मुझे लग रहा है ये गैंट चार्ट अगर एक एज अ डेस्क प्लानिंग टूल मैं पहले से एक गैंट चार्ट बना के रख दूं और वो सीरीज ऑफ टास्क्स विच आर रिक्वायर्ड. I think Dr. Uma, you are you on have mute. got muted. You got Yeah. muted, sir. So series Uma, of you got series of tasks जो है अगर हम लेफ्ट साइड में डाल दें, से सीरीज ऑफ टास्क मतलब obtaining the census data or the projected population data from the relevant authorities, वो एक टास्क होता है एसीएफ करने से पहले. उसके बाद मेरे को ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, सोशली, जियोग्राफिकली or clinically vulnerable and marginalized groups. I have to make a list of them. Then conducting the survey for mapping them, that itself is another activity. वो सारे टास्क को मैं टाइमलाइंस में ये हॉरिजॉन्टली डाल के जा सकता हूँ इस तरफ. एंड एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि कौन कौन से लोग क्या क्या करेगा. अभी बाद में एसीएसएम एक्टिविटी एक माइकिंग करना है ताकि लोगों को पता चले कि इस तारीख से इस तारीख तक हम मैपिंग के लिए आ रहे हैं, इस तारीख से इस तारीख तक हम एसीएफ के लिए आ रहे हैं. So I think it's a very good thing. And as you told earlier, there are certain critical pathways which has to be completed for the next one. And there are certain pathways where there can be overlaps as well as कुछ pathways ऐसा है, for example, अगर मैं vulnerability mapping कर रहा हूँ कि ये समझने के लिए कौन सा जियोग्राफिकली कौन सा क्लिनिकली वल्नरेबल है, कौन सा सोशली वल्नरेबल है, एंड मैं ये टास्क जो है गिवन टाइमलाइन में खत्म नहीं कर सकता हूँ. एंड मेरा ये टाइमलाइन आ गया है कि एक्चुअल सर्वे सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग ऑफ द एसीएफ शुरू करना है.
तो फिर भी मैं शुरू करता हूँ if I have a standby team and a contingency or a backup plan. So I think it gives it's not just a disk planning tool, it is a dynamic tool. As the project is implemented, it helps me to visualize over the timeline कि कैसा चल रहा है and how I can modify things. Isn't it, Dr. Pratibha ji? Absolutely, I agree with you, Dr. Uma, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मेरे लिए या हम सब लोगों के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटर हु इज लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कि हमें विजुअलाइजेशन मिलती है इस टूल से कि कहाँ पे क्या रिसोर्सेस कब डालना है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल एंड वी रिकमेंड यू to please use this tool in your project management. So going forward, in next slide, we are talking about Arogya Sathi app, communicating with patients. So Arogya Sathi app basically empowers the citizen and it is a direct interface with the healthcare system. ये जो app है ये हमारे पेशेंट को इंफॉर्मेशन ऑन टीबी बताता है, सिम्टम्स क्या है टीबी के, साइड इफेक्ट्स क्या है टीबी के, हेल्थ केयर फैसिलिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो सारे बताता है. इसमें एक FAQ का सेक्शन है, चैटबॉट, सारी चीजें बताती हैं इसमें. इसके अलावा आपका BMI असेसमेंट होता है, निक्षय संपर्क हेल्पलाइन है एंड मोटिवेशनल वीडियोस तक प्रेजेंट है फॉर आवर पेशेंट. यही नहीं, पेशेंट को रजिस्टर करता है, निक्षय आईडी जो मिलता है उसको इसमें डाल के वो बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे कि अडेरेंस डिटेल, पेशेंट अडेरेंस का डाटा हमें पता चल जाता है, रियल टाइम डाटा मिलता है, और अडेरेंस टू देयर मेडिकेशन शेड्यूल हमें पता चल जाता है, जो कि फर्दर रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इंश्योर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, राइट. इसके साथ साथ वो हमें ये चीज बताता है कि ट्रीटमेंट प्रोग्रेस कैसे चल रहा है पेशेंट का. हमें हमारी तरफ से ये ऐप जो है वो रिमाइंडर देता है पेशेंट्स को मेडिकेशंस के लिए, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो इन्फॉर्म डिसीजंस के बारे में बताता है. और यही नहीं, DBT की डिटेल्स भी इसमें है. एनीथिंग यू लाइक टू ऐड डॉक्टर उमा ऑन दिस? Yeah, see, there are two stages here. One is pre-login and login. वही ये ऐप का ब्यूटी है. It is called a citizen app basically because ये जो screening tool जो है, it helps a person to self-assess his health risk in terms of TB. That is the beauty of this tool. So everybody can use it, and it also gives information about the nearest health facility and what type of facility is available in that health facility with regards to diagnosis and treatment of TB. Yeah. And of course, it also has a chat bot integrated into it, and if it has a section on FAQs, frequently asked questions, and the answers are given in a pretty simple language. बहुत आसानी से ऑर्डिनरी सिटीजन को समझ में आएगा वैसा लिखा हुआ है. एंड स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड क्वेश्चन टीबी रिलेटेड अगर है मेरे को, मैं टाइप करके देखता हूं तो मैं हैव आल्सो ट्राइड, मैं टाइप करता हूं तो तुरंत इन अ सिंपल लैंग्वेज आंसर आ जाता है. उसके अलावा अगर मान लो मैं आई एम नॉट सो टेक सेवी, मेरे पास फोन तो है, इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकता हूँ या तो हिंदी में टाइप नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई बोल दिया तो अच्छा था करके अगर समझ लिया, मैं निक्षय संपर्क बोल के एक लिंक है, उसको क्लिक करने से ऑटोमेटिकली टोल फ्री नंबर आ जाएगा, वो डायल कर लीजिए. डायल करने से इंफॉर्मेशन भी आ जाता है उधर से, मतलब कस्टमर केयर जैसा टोल फ्री में बैठा है, वो लोग टीबी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं. Wonderful, wonderful. Dr. Pratibha, I know you are reaching the last slide now. Yes, sir. बट एक लड़की है कृतिका अपनी QIC और एक है हर्षा जी. दोनों इतने ज्यादा व्याकुल हैं कि बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन द GPS मैपिंग वाला ऐप, वो स्लाइड मिस हो गई है. सो दे आर सेइंग दैट गिव अस मिनट एंड वी वुड लाइक टू कवर दैट एस्पेक्ट. Sure. So over to you, Harsha and Kritika. Please have your time and date. Yes, sir. Sure, sir. Thank you, sir. So DTOs and team, अब तक हम सब ये जानते हैं that PDSA is an evidence-based management tool. But how can we take evidence of any activity which we are doing in a PDSA? So this GPS app is the answer to this question. With the help of this GPS app, we can take pictures of evidence activities as evidence. GPS app के एक सिंगल क्लिक पर हमें ऐसे पिक्चर्स मिलते हैं जिसमें डेट, टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इंक्लूड होती है.
So in this way, we can capture the live location of an activity in single click. For example, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हमारी करंट बैच से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हुए GPS ऐप फोटोज. So you can clearly see the date, time, location of the intervention activities. But the question is how to access this GPS app. So QIC Kritika, can you help with this? यस डॉक्टर हर्षा, ये बहुत इजी है. आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है और नॉर्मल कैमरे की तरह ही फोटोग्राफ खिंच जाती है और आपको हमको एज ए एविडेंस में आप पीडीएस के एविडेंस में प्लीज दीजिए. ये आपके ही फेलो कलीग्स हैं डीटीओस जिन्होंने अपना इंटरवेंशन स्टार्ट किया है पीडीएस में और हमने यही प्रेजेंट बैच की ही फोटोग्राफ्स लगाई हैं. तो हम टीम्स और डीटीओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पीडीएसए में हमको जीपीएस मैप कैमरा के थ्रू ही फोटोग्राफ्स दे जो भी वो इंटरवेंशन कर रहे हैं. Amazing. Thank you, Dr. Harsha and Dr. Kritika, for sharing wonderful, GPS camera app to us. I know it is very, very evident, essential for PDSA कि हमें evidences इकट्ठे करने हैं, right? So, अगर मुझे इसे समराइज करना है तो मैं बोलूँगी ओवरऑल आईटी हमारी हर चीज को सिंप्लीफाई करता है और ये टीबी मैनेजमेंट को भी सिंप्लीफाई कर रहा है बाय इम्प्रूविंग डाटा मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, डिजीज कंट्रोल इफेक्ट. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी. So we will definitely, discuss about e-prescription, e-health records in our upcoming session of QI, which is healthcare analytic, more in depth about clinical things. So thank you, DTOs, for listening to us. Over to you, Edwin. Okay, thank you so much, Dr. Pratibha. So here are a few quick links. You can refer to it. I think you're already referring to it. CTT website, Swasti Gurukul, CTT resources, so you can go through it and collect the information that you need. So most of the TB related information are available on these sites. Over to Dr. Kamuru Raman sir. Thank you, Mr. Edwin. Thank you, Dr. Pratibha. Thank you, Dr. Uma. Thank you, all the QICs. This was a session which was a combined effort of every possible team, DTOs and team members. May I request you switch on your videos. Give us a wonderful smile. This is the time to take the photograph and mark attendance. And while I ask Manoj to make the comments, and then I will be asking any DTO, any member to offer comments. DTO Sindhudurg, you're wanting to say something? So please switch on the videos. And Manoj, if you have comments to make. So, and then I will ask all DTOs and anybody in the team to make comments. So I'll say to DTOs, we have just opened up only a small area, small vision of what we can do potentially. We are so many potential things that we can use this technology. And so each one of you has a data entry operator with you. Use that data entry operator to be a partner, not ki ye karna hai, wo karna hai, wo karna hai, and you are separated from the technology. Be grounded in the technology. I can make PowerPoints, but Edwin can make those PowerPoints better. I can make Google Forms, but he can take it to a new level. But you have to have that confidence of going and doing that. So thank you, DTOs. That is how success will be in your ability to play and work with the technology. So thank you so much. Thank you, Manoj. And DTOs, please reach out to your QICs. If any of your staff would like to have a session again, would like to understand more better. If any of the DTOs also want a refresher of this session, we'll be most happy to do it. Today's objective was only to tell you what all can be done. What all can you ask your staff to do for you? The how part, if you're interested, we can take sessions later on at our mutual convenience. So with this, I think all it remains for me is to thank the Government of India, the Central TB Division, for giving us this opportunity to connect with you beautiful people.
And also one DTO today mentioned, I think Dr. Manish only mentioned, that there is an apprehension, there is a challenge where the ASHA workers may not accept such a new technique or something. Could you try again? So, next session will be on conflict management. And yes, Dr. Manish, I get to know that the MD NHM meeting, which was supposed to be at 3, got delayed, and majority of your DTOs, your minds were there. Please watch this video. This recording will be shared with you. And if you will ask me with a lot of love and affection to redo this session, we will do it for you. Thanks to the USAID. Thank you to the union. Thank you to the NTI faculty, SETI faculty, IT staff of SETI, all the QIs. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for all the DTOs and their staff for coming. Thank you.